Now, everyone know that how we make a frequency distribution table. So, if everyone know about this, then we will start the exercise. Exercise 22, 21 or 22, whatever. 21.21a. Sorry. Now, in exercise 21, the first question is the number of members of 20 families are given below. Prepare a frequency distribution of the data. For making a frequency distribution, it is not necessary to write the data in ascending order or descending order. You just, question number one, just make a table like this and make a 3 blocks or 3 rows, whatever. Then at the top, you have to write the information like this is the number of member, and then telemark, and at the last frequency. At the last, you can write frequency. And now, what is the possible minimum number in a family? श्रद्धा बताओ कितने मेंबर्स हो सकते हैं मिनिमम इन अ फैमिली? 3, ओके. और मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं. So, but in our this question, the minimum is 3, and yes, what is the maximum? Very good. So 3, 4, 5, 6, and 7. We have to write like this: number of member 3, 4, 5, 6, 7. And now I want I want Manjeet. Manjeet. Okay, Saksham, you tell me the numbers, okay, one by one. Then I am making the telemark. Tell me the number, please. नहीं ऐसे नहीं, you just read the number one by one. हो गया, आगे बोलो. Next number. Can I ask to another? You are not able to understand, I think. Yes, Ivani, please. Okay, then. Yes. Again 5. Okay, 4, 6. Your voice is not clear. 6, yes. Hmm. 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 5, 5. Okay. Hmm. 3, 3, 5, 5. क्या इतना टाइम नहीं लगाओ ना, जस्ट यू जस्ट से बोलना है तुम्हें नंबर, बस एक सांस लेना है बीच में. इतनी देर में मैं घूम जाता हूँ तुम्हारी तरफ. लो अब नेक्स्ट बोलते जाओ, डोंट टेक अ ब्रेक. ऐसे बोलो 3, ऐसे बोलो 4, 6, 5. लीव दैट कि मुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा. रिपीट इट अगेन. जस्ट रीड द नंबर स्लोली. यस. फिर इतना वेट क्यों कर रहे हो? जस्ट स्पीक.
Now see, these are the numbers given in number of members in a 20 families. So 3 will be 4, 4 will be in 4 families, 5 will be in 7 families, 6 will be in 3 families, and 7 in 7 in 2, sorry. Now total 4 plus 4 8, and this is 10, 18 to 20. So now see, the total is 20. This is called a frequency distribution table. What? Total? What do you mean by total? What we have to calculate also? तो कर तो दिया frequency. ये frequency calculate नहीं किया. ये क्या है? Yes, you have to do always. Yes, we have to do we have to do always. Write the frequency, find out the total, because we have to check if our total is not right, then the question is not right. Maybe some number is missing. This is called a frequency distribution table. Is is this clear to everyone? Then I hope ki then I hope ki you can do question number 2 and 3 by your own, because these are just simple questions. And now we start the grouping of data. Second topic, grouping of data. So now, for grouping of data, the direct example is there. So I will start with example also. The marks obtained by 40 students of a class 8 in an examination are given below. These are the marks of 40 students. Dividing the data into 5 groups. For making a group, we have to we see जब भी when we data into group, then we have to make class mark. Then we have to make class mark. Okay, and the class mark is like this: 0 to 5, and 5 to 10, 10 to 10 to 15, and then 15, 15 to 20, like this. Or any, if you do 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, or in any, it's not necessary ki you have to do always 5 5 5 10. You have to do like this: 0 50, 50 100, any. It's depend upon the information or data. Yes. So what is the important in this? So what is important in this? This is the class mark, and the most important thing is this is this is lower limit.
and this is upper limit. Okay, and would one more thing is this size of class, which is equal to upper minus lower limit, which is 5 minus 0 is equal to 5. So this 5 exists in every class. Okay, is that clear now? अब यहां पर हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है 5. क्या है? वी हैव ए ऑब्जर्वेशन, एक हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है दैट इज 5. तो वो मुझे कोई बता सकता है कि किस क्लास साइज में हम उसे एग्जिस्ट करेंगे? फर्स्ट और सेकेंड मीन्स, अच्छा ओके सक्ष सेकेंड एंड शिवानी फर्स्ट. तो शिवानी टेल मी व्हाई इन फर्स्ट, क्यों फर्स्ट में क्यों करेंगे? नहीं मालूम? Okay. If the observation, if the observation is equal to the upper limit के अगर वो बराबर हो जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. If a observation is equal to the upper limit, then we can include it in second next group. यानी ग्रुप नंबर, अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप नंबर 2. समझ गए क्या शिवानी? तुम्हें समझ आया? आर यू? मैंने इसमें ये बोला है, फिर से मैं बोल देता हूं कि इफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू द अपर लिमिट, वी कैन मूव, वी कैन शिफ्ट दिस ऑब्जर्वेशन इन द नेक्स्ट विथ लोअर लिमिट. ठीक है, दिस इज क्लियर नाउ? गुड. सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 21B. Okay, Shraddha, read the next question, please. First question, matlab, from the exercise 21B. नो नो नंबर्स डोंट, नो नो नहीं नहीं नहीं. हम इसका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे अब ये देखते हैं. The question number is this, and we have to prepare frequency distribution table. We have to make frequency distribution table. Now we have to draw a table again like this and make a 3 and put a space for a heading. Now, what is this? This is the marks obtained. So we can say that marks, and you know, this is a grouping. So how to make the class? वो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को भी. Tally mark, and this is the frequency. Okay. Now, the class size. How you prepare this? Prepare a frequency distribution. This is a 40 student marks. So in this, this is given here. You can start with 0 to 10, or it's not necessary. If it is not given, we will take 0 to 5 also, 0 to 7 also. It's up to you. It's all up to you. What is the lower limit and what is the, but if you make a class interval, always the size must be same, and the upper limit of the first become the lower limit of the second class.
ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए फिर हमें कुछ करना पड़ता है. So now here this is given 0 to 10, then 10 to 20, 20 to 30, and what is the maximum marks for this? See the maximum number please. 49. Yes, 49 is the maximum marks. So these are the class ये बनाया हमने. Okay, and now we have to mark the frequency. Up, Shraddha, can you read? Now one by one without break. I don't need, you can take break. Just 8 and then next. Yes. Yes. Mm-hmm. 22. Mm-hmm. Yes. 13. Yes. Two times. 13. Okay. 13. Don't repeat the number, please. 13. 38. Don't repeat. Hmm. Don't repeat. 3. Hmm. 34. Yes. 29. Okay. Okay. 7. 15. 24. 38. Yes. 31. Oh, sorry. Just a minute. Then 21. Okay. 35. 35 come here. 42. 24. 45. 20. 23. 21. 27. 29. Yes. 49. 25. 48. 21. 15. Yes, repeat the number. After 15, okay, 18. Good. 18. 27. Yes. 19. 45. 14. 34. 37. 34 is the last number. Okay. बन गया भैया हमारा ये टेबल. I made this table with the help of Shraddha. ठीक है, अब ये टेबल हमारा बन गया. Okay, now the lower one is not visible. Okay. Now see, 0 to 10 is 3, 10 to 20 is 5 plus 3, 8, and 0 to 30 is 5 plus 5 and plus 4 is 14, 5 plus 4 is 9, and this is 5 plus 1, 6. Now find out the total fast. This is 20 plus 9, 29, 29 plus 3 is 32, and 8 is 40. Now the total
is 40. If the total is 40, then our solution is right. Otherwise, we have to do this all again. This is clear? Good. So this is clear. Now, अब इन क्वेश्चंस में मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या और कराऊंगा. Now second question. Ria, read the second question, please. No, don't read the numbers. Please, please, please. Don't read the numbers. Just read the next line, last line. Arrange the above data. ठीक है, समझ में आया? एवरी टाइम दिस इज अब ये इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है, बट don't think कि every time this is written in the question. You have to make your class size or class interval. वो तुम्हें देखना है कि तुम कैसे उसको एग्जिस्ट करोगे. एंड द लास्ट मीन्स द अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट. नेक्स्ट में वो इंक्लूड होगा. तो आई थिंक एवरीवन. और व्हाट इज द मिनिमम? मिनिमम क्या है इसके अंदर? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 312. So you can start. And what is the maximum? What is the maximum? 7 780. Okay, this is the maximum. Okay, this is the maximum. So और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू डोंट थिंक कि भाई इसको हमने 300 से स्टार्ट किया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. इट्स ठीक है. अगर हम इसका ग्राफ बना, इफ वी मेक अ ग्राफ फ्रॉम दीज इंफॉर्मेशन, so you can see anything, a kink that is used in a graph like this. किसी ने देखा है इस तरह की? दिस इज बेसिकली कॉल्ड किंक. थर्मामीटर में भी होता है. किसी ने देखा है ऐसा किंक ग्राफ में? थर्मामीटर में तो होता है, हमारे ग्राफ में भी होता है. सो इन द क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली विथ 300, 400 and 400, 500, 500, 600. देन नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि इसका क्लास इंटरवल ये नहीं कि उसके ऊपर 0 to 100 उसके बाद वो भी लिख देना. वो लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली 300, बिकॉज द minimum is 312. So we can start from 300 directly. Don't write 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, because that the past before this is not required, because the minimum is 312. So we start with 300 to 400, 400 to 500, or the maximum is 780. So we can use till 800. Is this clear? So for the question exercise 21B, question number 2, you can do your own. But this, you can take the class size like this. This is class. और अगर यहाँ कुछ भी ना मिले लिखने के लिए, तो you can write class interval. You can write CI in short. CI. It's a class interval. Okay? अगर तुम्हें समझ नहीं आता है कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, so you all mention. Now here तो ये यहाँ तो हमें दिख रहा है this is a bill. तो अब यहाँ बिल है, तो हम यहाँ बिल थोड़ी लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे क्लास साइज, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क.
CI, वो आगे जाओगे तो तुम्हारे को उसमें मिलेगा क्लास इंटरवल CI, पूरा भी लिख सकते हो क्लास इंटरवल, और यू कैन राइट CI ऑल्सो. क्लियर? Is this clear or not? Because sometime we don't have a word to write here. Then we will write CI, class interval. Okay? Okay. Now, Shraddha, check the question number 3 is same or different? Same. So what I do? What? CI, अच्छा CI डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है. तो व्हाट आई डू, कैन आई गिव इन होमवर्क? यस. तो मुझे लगता है कि फिर तो एक्सरसाइज 21B ही पूरा होमवर्क में लिख लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हाँ एक ही जैसे होंगे. ओके, लिसन लिसन वन मोर थिंग. यू डोंट you all can send the homework till exercise 21A. Clear? From the 21B you have to you will submit, और तब तो तुम स्कूल आ जाओगे, और मे बी if you are continue the online class, then in the next week you will submit the exercise 21B. ठीक है? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बोलो. ठीक है, बिकॉज ऑल क्वेश्चंस आर सेम. इसके बाद भी यस yes 21A, you all have to submit the homework till 21A. और अगर नहीं भी भेजो, मुझे कोई मैटर नहीं करता है 21 चैप्टर, वट एवर द पास्ट यू कैन सेंड. 21 चैप्टर को हम नेक्स्ट वीक यूज कर लेंगे. ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी, अगर कोई नहीं भी कर पाता है. यस, भेज देना है. यस, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली. तो अब हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोग्राम, बट नाउ आई विल मैनेज अनदर एंड सेंड द लिंक टू, मैं ग्रुप में भेजता हूँ और यू ऑल विल ज्वाइन. ओके. Okay, now visible and audible. Yes, sir. Okay. Now the exercise 21C. Before we this histogram. किसी ने बनाया है पहले हिस्टोग्राम? Yes, sir. बनाया है. ओके. Yes, sir. Oh sorry, yes. Now for histogram you all can buy a graph copy. Clear? Sir, Okay, I sir. have. If anyone have, then you can do in that, no problem. But if anyone, Sir, I don't have it now. तो तुम उसे खरीद लो आज, और फिर कल हम मतलब जब करेंगे तो, क्योंकि इसमें हिस्टोग्राम बनाना है, सो यू हैव टू मेक. Yes, sir. ओके.
Now, for making histogram, now see the example number. See, one more thing. There is some method to draw histogram. Mark the class interval on the x-axis. See, वो तो मैं इसमें बताऊंगा, छोड़ दो इसको. See, if there is a table like this, if there is a table, okay. So, and this is a marks, and this is the number of. This is basically the example number 1. So, number of students. Now, this is the question here. Now, the marks is what? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. And then 50 to 60, and the last one is 60 to 70. 60 to 70, I think, now it's visible. 60 to 70. Okay, and the frequency is what? 7, 11, 9, 13, 16, and 4. So, the very first thing, you all know that when you are making a graph like this, कहीं जब भी हम एक ग्राफ बनाएंगे, while making a graph, you know that this line is x-axis and this is y-axis. Yes? Clear? And the marks is always, we have to represent the marks on x-axis and number of student in y-axis. Clear? This is clear? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. तो सबको ये चीज क्लियर हो गई है? समझ में आया? When we are making a graph, so the lower line, this, उसको हम क्या कहेंगे? Parallel to the ground जो होता है, this is x-axis and perpendicular to the ground is y-axis. हमेशा याद रखना है इस चीज को. और now see, अभी for classwork, now for now, you all can do the rough. और जब ग्राफ पेपर आ जाएगा तो फेयर करना है. और you can stick this graph paper in your copy. So now this is the x-axis and this is the y-axis. So we have to draw like this. Clear? कोई confusion नहीं है यहाँ तक? And now see, this is start from 10. So 0 to 10 is missing here. 0 to 10 is missing here. So we make a kink here. Is that clear, everyone? Yes, sir. So first Yes, we sir. have to make kink in x-axis and then 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and 70 is the maximum. So we can write like this. Is it visible now? Yes. Now in the x-axis, and this is x-axis, and you have to write the marks here like this. Okay? And now the y-axis. Now you see in y-axis what are the numbers? 7, 11, 9, 13, 16, 4. So what we have, अब हम इसे कैसे लिखें? So we will take, if you want to take a, अब छोटा ग्राफ बनाना, then you can take a scale like 5, 6 and all. मतलब अब now हम एक scale लिखते हैं यहाँ पर y x, ये scale.
for y-axis. You all know that this is a 1 centimeter line, but we write 1 unit is equal to 1 unit is equal to, according to book is taken 1 unit is equal to 2 students. If you want to take a 3 students, 5 students, it's up to you. It's not it is not any problem. You can change the scale. Now I am doing this question according to book. Now the scale 1 unit is equal to 2 students. 2 students. Okay, and in the graph paper we have to write the scale also. Now we start here with 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and the last one is 16. Clear? अरे किसी की Yes, आवाज sir. नहीं आ रही है, क्या हुआ, सीरियस क्यों हो गए? Now it is clear? Sir, clear. Good. So Yes, Yes, sir, sir. cleared. now see the frequency of 10 to 20. Itna 7. So we come here and between there is a center mark. 6 between 8 there is a mark slightly highlighted. That is midpoint. So that is 5. That is 7. So हम यहाँ पर आएंगे और एक ऐसा बॉक्स बना देंगे ऐसे. सबको दिख रहा है बॉक्स? Yes, sir. Good. Yes, sir. Now to 20 to 30 is the 11. So 11 is in between 12 and 14. 12 and 14. No, 12 or 14, 10 or 11. 11 is between 10 and 11. So we can check here. This is the point. So first we join this and second is this. Clear everyone? Now the 40, for the 30 to 40 is 9. So 9 comes between 8 and 10. So we can mark a point here 9. This is the 9 and this is 40. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Now the next is 40, 13. So 13 comes between 12 and 14. So what is the center line of 12? Yes. So we will draw like this. Then next is the 16. So 16 is the max and we can move like, we can move top. 60. Now it is 4 and 4 is here. So we have to draw like this. Now this is the, what is this? Histogram. So what is the difference between bar graph and histogram? Sir, कुछ भी नहीं, same है. अच्छा ठीक है. Yes, sir. I want to know with everyone. सबने बनाया है बार ग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई डिफरेंस नहीं है? Yes, sir. है डिफरेंस? यस सर. सर इस हिस्टोग्राम में सटा हुआ रहता है और बार ग्राफ में डिफरेंट प्लेस पे रहता है. Yes, this is the actual difference. This is the difference basically. In histogram, this is a continue class. Understood? This is 10 to 20, so there is no gap. The gap Yes, is sir. not allowed between the two. But in the bar graph, there is a gap. Yes, ऐसे ही होता है ना bar graph में. There is a gap between two consecutive this bars. Clear? This is the basic difference, and this is the important difference between the histogram and bar graph. So in histogram, there is no gap between the bars, and in bar graph, there is a gap between the two bars, two consecutive, two continuous bars. Now this is clear with everyone? ये सबको समझ Yes, आया Yes, है sir. क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो अब
इसके बाद कुछ नहीं होता, एक क्वेश्चन मतलब खत्म हो गया। और now see, everyone see the exercise 21C. तो यहाँ पे किंग दिया हुआ है जो आप बता रहे थे। अच्छा किंक है, हाँ तो वो हमेशा होगा, यू हैव टू ड्रॉ द किंक। और यहाँ पर सर जरूरत नहीं पेज थी वैसे, 238 में। नहीं यहाँ पर जरूरत नहीं थी किंक, इसमें किंक बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 to 10 यहाँ पर है, लेकिन हमने इसको एम्प्टी छोड़ा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर किंक बनाओगे तो भी ठीक है, नहीं तो वो भी ठीक है। सी, अगर हम इसको यहाँ से, सपोज हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया होता, देन किंक you have to draw the kink compulsory. It's a compulsion to draw because यहाँ पर 0 to 10 है, ये सेम थे, 0 to 10, 10 to 20 and like this, तो ये सेम हो गया, तो यहाँ पर किंक की जरूरत नहीं है। और if it is not continue like this is 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, if we start with 30, then if we start with 30, then what happens? See, the graph is like 0, then 30, then 40. Clear? So first gap is 30 and second gap is 10. So you can draw the kink here. In this question, the kink is not required. तो मैंने बताया कि एक एक्सिस पे हम बना सकते हैं। So now see everyone 21C. The top speed of 30 different land animals have been organized into a frequency table, frequency distribution table. The maximum speed is in kilometer per hour and the number of animal is the frequency basically. So the class mark is, or class interval is 10 to 20, 20 to 30 till 60 to 70. So 3, 5, 10, 8, 0, 1. Okay. Now Riya, tell me कि in x-axis what we have to represent? Sir, marks. Marks? इसका सर marks? may I? नहीं, वो So, कि क्या होता है, तुम क्लास के बीच में अपनी बुक्स को बंद करके बैठ जाते हो क्या? no, sir. Then सर बुक में or you are not 21 listening नहीं। what I'm saying. मैं क्या कह रहा हूँ तुम सुन नहीं रहे हो. If you are not Yes, doing sir. doing this ना, तो कितनी भी कोशिश कर लो. Sir, I am doing. Then why you say marks? Sir, exercise 21C is not there in book. Not there in book. It is not. Sir, Sir, it is मेरे there. सर Sir, है, मेरे book सर 22 देखो C सभी is देखो ये there। क्या है, एक्सरसाइज 20C है, 21C, प्लीज सी रिया। सर मेरे में भी है। Yes, sir. Sir, नहीं है। की है। सर सर, है, मेरे बुक में नहीं है। सर मेरे में मेरे तो बुक में है। नहीं है। यू आर नॉट सर यूजिंग मेरे द, No, sir. यू आर नॉट यूजिंग द बुक दैट इज प्रोवाइडेड, मतलब दिस बुक इज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। सर स्कूल वाला ही तो बुक है। Yes, sir. तो तुम्हारे पास नहीं है रिया। रिया, दिस एक्सरसाइज इज देयर इन योर बुक और नॉट? No, sir. It Okay. is not there. अच्छा ठीक है, तो मैं इसका स्नैप लेके ग्रुप में डाल दूं या तुम्हें पर्सनली भेज, मैं तुम्हें पर्सनली भेज दूंगा इसका, या मैं किसी को ड्यूटी दे देता हूँ। कौन कौन है तुम्हारे कंसल्ट में, कोई स्टूडेंट है रिया के कंसल्ट में? सर मेरे बुक में नहीं है 21C। तुम्हारे बुक में भी नहीं है? अच्छा ठीक है, No, कोई sir. बात नहीं, मैं इसका फोटो खींच के भेज दूंगा तुम्हारे को और रिया को। इज देयर एनी मोर एनीवन जिसके बुक में नहीं है? नो सर। ओके ठीक है। सर 21C मिल गया। मिल गया? अब कहाँ से मिल गया तुमको? सर के पुराने वाले बुक में है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फोटो इसको स्नैप करके भेज दूंगा तुम्हारे को, यू कैन जस्ट सी फ्रॉम देयर। सो इन द क्वेश्चन नंबर 1, द टॉप स्पीड ऑफ 30 एनिमल्स or 30 different kind of land animals have been organized into a frequency table. So Saksham, tell me
what we have to represent in x-axis? Manjeet, are you there? Or Saksham? Yuva, Yes, sir. tell me. What we have to represent in x-axis? Sir, maximum speed. Maximum speed. And what about the number of animals? Sir, y-axis in number of animals. Okay, and now tell me one more thing. Yuva, you tell me one thing. Ki, what is the scale? What do you think about the scale in on y-axis? 1 unit is equal to what we have to take? 3, 5, 10, 8, 0, 2. क्या लेना चाहिए Sir, हमारे 5. 5 5 तो बहुत छोटा सा ग्राफ बनेगा. We have to take either 1 or Sir, may I tell? yes Sir, बोलो. may I tell? हाँ any बोलो yes. Sir, 2, Sir, 4, 6, 8, 10. Yes, 2, it's 4, better. 6, 8, Sir, 10. If we take 1 तो वो थोड़ा बड़ा ग्राफ होगा. If we take 2 और if we take 5 तो बहुत ही छोटा हो जाएगा because there is maximum is 10 only. So 5 and 10 तो दो ही लाइन में ग्राफ बनेगा तुम्हारा. So Yes, sir. you will see this is important to take a scale on y-axis. Okay, clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, I sir. think Yes, sir. I think I will continue this exercise from tomorrow because some of the students don't have book. So मैं आज भेज देता हूँ ना फिर I will start. Okay, and you both जिसके पास book नहीं है you can take a printout if possible. Otherwise you can use your phone while doing this question. तो एक साथ हम नहीं कर सकते. So better कि you just take a printout of 1 or 2 pages. Okay. Okay, sir. Bye bye. Take care, everyone. Thank you, Thank sir. you, Class sir. is over. Thank you, you, sir. sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Bye.